ऑन है क्या अभी? हाँ मैम, और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे जी। दिशा सालियन के डेथ के जस्ट आई थिंक सेकंड डे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को छोड़कर चली गई, सामान पैक वगैरह करके। चैतन्य डेट क्या है? सेम डे। हाँ सेम डे वो सुशांत को छोड़कर वो चली गई। और एक शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कई जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने ये बात कही है कि वो टाइम पीरियड और खास करके आई थिंक दैट मर्डर ऑफ सुशांत सिंह, उस समय रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे, इनका 44 टाइम्स कॉल हुआ एक दूसरे का। तो ये दो चीजों के बारे में कुछ रेफरेंस है आपके पास जो डायरी अवेलेबल है, या फिर वो डिकोडिंग के बाद पता चलेगा? बाद में पता चलेगा सर। अभी तक जो किया है अभी तक इसके बारे में आया नहीं है, आगे जाके आ सकता है। बट हाँ, आदित्य ठाकरे के बारे में रेफरेंस आया था कि उन्होंने फोन करके सुशांत को एक बार धमकी दिया था कि भाई तू क्यों आर यू गेटिंग इनटू द डेथ ऑफ दिव्या भारती, तभी सब लोग खा के छुप रहे हैं, एवरीवन नोज द ट्रूथ, इफ यू डोंट स्टॉप यू ऑल दिस नॉनसेंस यू विल सी व्हाट वी आर। कि आदित्य ठाकरे ने उनको कॉल करके थ्रेट दिया था बोल के, दैट इज मेंशन्ड इन हिज ड्राइव्स। So regarding sir, let me tell you one thing, sir. I am not Sushant's fan. I have not followed him. I have not even followed his death till I got to lay my hands on his drives on February 21st. Because till then I was totally engrossed and was being harassed for trying to fight Srideviji's case. So I was totally into that thing. I was not following Sushant's case at all. But since they both belong to the same field, Srideviji and Sushant, and we were also investigating Srideviji's things. So we got some information about Sushant's drives. So that's how I came into this. And I didn't want to, complicate my life further and bring on more troubles to myself by getting into this. All I wanted to do was just hand it over to CBI, get it validated, and hand it over to CBI. As a duty-bound citizen, I feel that just handing over the drives was not important, but handing over it in a proper manner by ensuring that those are not tampered later on. Because electronic evidence is very easy to tamper. But a secured and highly encrypted electronic evidence is equally difficult and almost impossible to destroy. So I request the court, Citizens Court of India here today, to, when they make an appeal or judgment on this case and decide to put pressure on the agencies that this is what, I want you to put pressure on them to take cognizance of the evidence which I am trying to submit. Because Section 3 of the Indian Evidence Act, 1872, it clearly states what is a fact, what is relevant, the different types of evidences, documents, how a fact is proved, disproved, and not proved. And electronic evidence can be said, as according to the Section 3 of the Indian Evidence Act, electronic evidence can be said to be a piece of evidence generated by some mechanical or electronic processes. It includes, but not restricted to, emails, text documents, spreadsheets, images, graphics, database files, deleted files, hard drives, data backups located on floppy disks, zip disks, tape drives, CD-ROMs, cellular phones, microfilms, pen drives, faxes, etc. So all this can constitute as electronic evidence. And since earlier there was no such IT that was used to be there were no new laws that were mandating this IT thing. And accordingly, the Information Technology Act 2000 came to be enacted. And the IT Act, it clearly states, apart from providing amendments to the Indian Evidence Act, the Indian Penal Code of 1860, the Bankers Book Evidence Act of 1891, the IT Act mainly recognizes
the transactions that are carried out by means of electronic data interchange means communication between one computer to another computer. Computer here means any device which can receive and transmit signals. So, and in this case, maintaining the integrity of electronic evidence throughout the investigation, and here in my case, 3.5 years without being accepted, without being validated, it's a very challenging job. It's more challenging than handling your traditional or physical or documentary evidences, because remotely it can be tampered through cyber attacks or attempts. But still then, since the drives are in my possession and since I have taken the responsibility, it's my duty to maintain its authenticity, which I am maintaining with great difficulty and many challenges. We are having to spend a lot on our server, on our data packets, because there are ceaseless cyber attacks every day from masked IP locations around the world, just to know the drive's location and sabotage it. It's a headache on me. हाँ. It's a headache on me, sir, to be carrying those आपका drives mic with me and mute है, sharing ma'am. those. I'm sorry. Yes. Can you hear me मैम now? आप सुन सकती हैं? I can hear you. हाँ. Can you hear me now? प्राइमा फैसी आपसे जो इंफॉर्मेशन आवश्यक है प्राइमा फैसी लेवल पे, वो वी आर थैंकफुल फॉर दैट वन थिंग. सेकंड थिंग, आपके जो कैंडिड मीना पे जितने भी आपने जो ये दिए है पूरा एसएसआर डायरीज को जो पढ़ा है, वो दोनों चीजें हमने हमारे इसमें लिया है, और इसको ऑथेंटिसिटी और उसको जो प्रूव करने का है. देखिए, कॉन्टेम्पोरस जो कंडक्ट होता है या फिर एक्ट्स होता है वो आसान है. फॉर एग्जांपल, इतना बड़ा चिंता का विषय नहीं है. फॉर एग्जांपल, एक आदमी है, उसने अपने डायरी में लिख दिया कि ये 50 चीजें हुई है, तो इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये तारीख को मिस्टर सुशांत सिंह यहाँ पर थे, नहीं थे, ये उन्होंने कहा है. अगर उन्होंने इसमें आदित्य ठाकरे का नाम लिया है और सेम को कोरैबोरेट देश का कैबिनेट मिनिस्टर भी कर रहा है और भी कर रहा है, तो ये सब चीजें मिलकर एक कलेक्टिव एविडेंस बनता है, वो एक दूसरे को सपोर्टिव है. तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है. और आपके पास जो भी और अवेलेबल होगा, आप प्लीज अंबर जी को मेल कर देना. अभी इसका जरूरत आगे पड़ने वाला है. इस ये जो हमारी प्रोसीडिंग चलेंगी उसमें एक स्टेज ऐसी आने वाली है जिसमें हम कोर्ट में सभी विटनेस को हम बुलाने वाले हैं सरकारी अदालत में. तो उस समय आपके पूरे एविडेंसेस भी लिए जाएंगे. आपको जो भी बोलना है सब वहां दे देना. कोर्ट इज कॉम्पिटेंट, आइदर खुद वेरीफाई करेंगे और अगर कोर्ट को लगता है तो एजेंसी को देगा. नाउ कमिंग टू पॉइंट. ओके, ठीक. मैं अभी प्लीज एक मिनट, दो ऑप्शन है अभी. सुशांत सिंह का जजमेंट अभी प्रोनाउंस किया जाए या सहारा का टेस्टिमोनी लेकर बाद में प्रोनाउंस? ठीक है, सहारा वाले आप प्लीज आ जाइए. अग्रवाल सर, अभिषेक जी.